Okay, so now we are going to start with the next ratios. In the previous video, we have done liquidity ratios, current ratio and quick ratio. Second important ratios, very important two, we are going to cover capital structure ratio, or also known as long-term solvency ratios. So now capital structure ratios are also known as I said, long-term solvency or gearing ratio or solvency ratio also. So now what this ratio actually is going to let you know, ability to repay the principal amount when due. Means, like, first of all, we have to understand capital structure. So capital structure means to what actually the company is having in the capital. How much is the ratio? Like there can be two main sources for coming up with the capital. One is debt and other is equity. So what is exactly the proportion of that? What is the company's structure? How much is the debt? How much is the equity? Debt kitna hai or equity kitna hai? And similarly, this ratio will let you know, means according to whatever the answer we are going to get from the ratio, that whether the company is able to pay its whatever the amount they have to pay in future, whenever that is going to be due, whether the company is able to pay that. Similarly, there is one ratio, interest coverage ratio. Interest coverage ratio similarly is going to let you know कि क्या company अपना interest, like डेट उठाया है तो ऑब्वियसली दे हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन टाइम. लोन उठाया है बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, दे हैव टू गिव इंटरेस्ट ऑन टाइम. सो वेदर द कंपनी इज एबल टू पे दैट मच व्हाटएवर द इंटरेस्ट अमाउंट इज और नॉट. So first important ratio is debt equity ratio, or this ratio is also known as leverage ratio. So debt equity ratio, as I said, capital में there are two main sources, debt and equity. या तो कंपनी डेट से पैसा उठाती है, इक्विटी से, या दोनों से. सो इट इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड्स एंड ऑनर्स कैपिटल. इक्विटी इज द ऑनर्स कैपिटल, ऑनर्स ने कितना अपना पैसा लगाया है, एंड डेट आ जाएगा कि आपने बाहर से कितना बोरो किया है. Means those are exactly not your borrowers, but exactly not your owners, but your creditors and all. So, or it is also known as the claims of creditors or and shareholders. Shareholders again going to be on the equity side, and claims of creditors are also again going to come to your debt side. Very simple ratio, debt over equity. You will get the answer. Debt equity ratio का यही formula है, debt divided by equity करेंगे, you will get the answer. Now there are two methods you are going to see from in different books. One is going to be when you are going to take total debt over equity, and one is going to be when you are going to take long-term debt over equity. जब long-term debt लेना है तो long-term debt is going to be balance sheet में, you are just balance sheet or wherever the information is given, you are only going to take debt, or which is also known as debentures. Now shareholder equity, what we are going to cover in shareholder equity, these four things: equity capital, preference capital, reserves, and profit and loss. This is going to be your shareholder equity. So this is your first method for debt equity, when you're going to take only long-term debt. And shareholder equity में चार चीजें आनी है: preference capital, equity, P&L, and reserves. Second method is when you're taking total debt. Total debt में short term as well as long term both debt you're going to take. Debentures भी लेंगे and उसके debt भी लेंगे, and उसके अलावा आपको कोई भी short term liability given है, means you can say whatever the other current liabilities are given in there, you are going to take those as well, and divided by shareholder fund जो हमने same ही किया था. So now again, as I said, ratio analysis में there is a rule of thumb that क्या आंसर आएगा या क्या, what is going to be the ratio, so that we are going to interpret accordingly. So in case of debt equity ratio, there are two different methods for the same. One is that it should be 1:1, मतलब 50-50% होना चाहिए. कंपनी ने अगर 5 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल उठाया है, तो अगर 2.5 लाख डेट है और 2.5 लाख इक्विटी से है, दैट इज गुड अकॉर्डिंग टू दिस रूल. Similarly, there is one other rule, that is 2:1, means debt should be more than equity.
आप डेट से ज्यादा पैसा उठाना चाहिए इक्विटी के कंपैरेटिवली, बिकॉज देर आर सो मेनी रीजन की डेट एक तो चीप सोर्स है, आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं उनको एज ए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी में आपको जितना बचेगा वो सब देना पड़ेगा. सो देर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड दैट. सो वन रूल सेज दैट शुड बी डबल, डेट शुड बी डबल ऑफ इक्विटी. सो ऐसा अगर आपका आंसर आ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट रूल यू आर टेकिंग इनटू योर पिक्चर. सो इट इज नॉट कि आपको if you are okay with 1:1, you have to interpret like that 1:1 should be the ratio. अगर आप कहते हो कि because there are different school of thought, कई कहते हैं it should be 50-50%, कई कहते हैं it should be double of equity, that should be double of equity, कई कहते हैं कि it is not going to be impact. So there are different school of thought. So that is like it's depend on you only how you're going to interpret this ratio. So this is we have done. So now I'll just show you here. If you can see, this is the case, and debt equity ratio, if you have to calculate from here. So how we can calculate debt equity ratio? Debt over equity, and debt आपका कहाँ है यहाँ पे? अगर there are two formulas I said, total debt over equity you can take, or लॉन्ग टर्म डेट ओवर इक्विटी यू कैन टेक. सो अगर मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म ले रही हूँ, सो यू कैन सी डेट मतलब डिबेंचर्स, मैंने बोला था डिबेंचर्स सिर्फ 1 लाख का है. सो 1 लाख डिवाइडेड बाय इक्विटी. इक्विटी में देयर वर 4 थिंग्स: इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व एंड P&L. सो ऑल दीज 4, 150, 50, 70 and 30. We can just add these 4, and that is going to be 3 lakh. 1 lakh divided by 3 lakh is going to be 1:3. 1:3 का simple meaning, if you can see that कंपनी ने इक्विटी से ज्यादा फाइनेंस कर रखा है एज कंपेयर टू डेट. सो अगेन I interpreted like that equity proportion company कम कर सकती है for future, but that again depends on your interpretation. What do you want to say? कि equity ज्यादा है, then also you can say it is good, or you can say no, that company को ज्यादा debt से करना चाहिए. So accordingly you have to mention the accurate reasons with that. So this is how to calculate debt equity ratio. Next ratio is interest coverage ratio under solvency ratio only, which I said what this ratio is going to interpret or is going to let you know that whether the company is able to pay its interest obligation on time or not. और इसका रूल ऑफ थंब है जितना ज्यादा होगा दैट इज गुड. जितना ज्यादा कंपनी के पास पैसा है, फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 का इंटरेस्ट देना है, लेकिन आपके पास जो बचा हुआ पैसा जिसमें से इंटरेस्ट देना है दैट इज 1 लाख. सो 10 टाइम्स ज्यादा पैसा है आपके पास. इंटरेस्ट जितना आपको देना है, आपके पास 10 टाइम्स ज्यादा पैसा है. आपको देना 10,000 है, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए पड़ा आपकी जेब में. सो इट मीन्स यू हैव 10 टाइम्स ज्यादा पैसा. सो इट इज गुड. सो दैट इज द सेम केस. हाउ टू कैलकुलेट इट? सिंपल. व्हाट यू हैव टू टेक, क्योंकि आपके पास जो पैसा बचा है, प्रॉफिट जो है आपका, उसी में से पैसा दोगे ना इंटरेस्ट के लिए. तो अगर आपको याद हो हाउ टू कैलकुलेट इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी निकालने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है, वी डिडक्ट इंटरेस्ट फ्रॉम दैट प्रॉफिट. टैक्स देने से पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं. सो दैट प्रॉफिट यू आर सपोज टू टेक ओवर हियर. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. इंटरेस्ट और टैक्स से पहले वाला जो भी प्रॉफिट आपका कैलकुलेट आप करोगे, अगर नहीं गिवन है इन द सम, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस करने, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड ऑपरेटिंग इनकम ऐड एंड माइनस करने के बाद व्हाटएवर प्रॉफिट यू आर गोइंग टू गेट, दैट प्रॉफिट यू आर गोइंग टू टेक ओवर हियर. And one very simple thing, depreciation you are going to add only and only if you have deducted depreciation from here. ठीक है, अगर आपने इस प्रॉफिट को निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस किया है तो ऐड करेंगे, अगर नहीं किया है तो देयर इज नो नीड टू गो विद दिस डेप्रिसिएशन. डिवाइड कर दीजिए इंटरेस्ट के साथ, यू विल गेट द आंसर. सो हियर इफ वी कैन सी, इफ आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम हियर, this is the case. We just need this much information, the bold one, to calculate interest. कंपनी का सेल है 5 लाख का, सेल वर्थ 3 लाख on credit. The cost of goods is 30% of the sale. Depreciation 10,000, operating expense 35, interest obligation 25,000. Okay, so now what we can do, we can just 1 second.
Oh, sorry. Okay. So, how to calculate? Because every information is given to us. First, we need to calculate the profit, what I was talking about. I'll just let you know how to calculate that. So, sales minus COGS karenge, we'll get gross profit. We all know depreciation, expense, administration and general expense, and selling expense. If we'll deduct, we'll get operating profit or EBIT, minus interest, EBT, minus tax, EAT. But right now, for the calculation of your interest coverage ratio, we need this profit, which is known as EBIT. हमें EBIT चाहिए. So information is given. Sale 5 lakh का है, COGS 30% of sale बोल रखा था सब में, 1,50,000. Depreciation minus करके, expense minus करके, EBIT is 3,05,000. So बाकी की information हमें नहीं चाहिए. This is the formula, interest coverage ratio, and 3,05,000 is the EBIT, operating profit, plus depreciation divided by interest. इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन भी गिवन था कि कंपनी को एनुअल इंटरेस्ट 25,000 पे करना है. सो एंड कंपनी के पास कितना पैसा, इफ यू कैन सी 3,15,000 एंड कंपनी हैज टू पे ओनली 25,000, इट मींस इट्स गुड. परसेंटेजेस, कंपनी के पास 12.6 टाइम्स ज्यादा पैसा है इंटरेस्ट पे जितना उसका इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन है. So with this we can just conclude for this ratio over here that yes, the company is somewhere not somewhere, company is very well we can say able to pay its interest on time, as the company had that much of money. So it's good. So with this I'm going to stop this video over here itself, so that and in the next very ratio will in the next very video we'll start with the new ratio, the next ratio, that is profitability one.